पाकिस्तान के कब्जे च भारतीय पायलट अभिनंदन की शुक्रवार रिहाई होने जा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसका ऐलान किया है। तो इधर भारत दीयां तिन्ने फौजां ने सांझी प्रैस कॉन्फ्रेंस करदियां पाकिस्तान ते वड्डे झूठ बोलण दे इल्जाम लाए। पाकिस्तानी खेतर विच गिरफ्तार किए गए भारतीय हवाई फौज के विंग कमांडर अभिनंदन नूं पाकिस्तान शुक्रवार रिहा करेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि शांति के प्रतीक वजों वो अभिनंदन नूं रिहा करनगे। उधर देश दीयां तिन्नां फौजां ने सांझी प्रैस कॉन्फ्रेंस करदिआं भारतीय पायलट की रिहाई का स्वागत किया और पाकिस्तान ते कई तरह के झूठ बोलण के इल्जाम लाए। 27th February 2019 at around 1000 hours, Indian Air Force radars detected a large package of Pakistan Air Force aircraft heading towards the Indian territory, towards general area Jangar. They breached the Indian airspace west of Rajouri in the Sundarbani area. The ingressing aircraft were observed to be at various levels. IAF fighters, including MiG-21 Bison, Sukhoi 30 MKI and Mirage 2000 were tasked to intercept the intruding Pakistan Air Force aircraft. The Pakistan Air Force aircraft attempting to target our military installations were intercepted by the IAF fighter aircraft, which foiled their attack. Although PAF bombs have fallen in the Indian Army formation compounds, however, they were unable to cause any damage to our military installations. In the aerial combat that ensued, one F-16 of Pakistan Air Force was shot down by an IAF MiG-21 Bison aircraft. The F-16 crashed and fell across the line of control in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. The IAF lost one MiG-21 in the aerial engagement, and though the pilot ejected safely, his parachute drifted into the Pakistan-occupied J&K, where he was taken into custody by the Pakistan Army. There have been many factually incorrect statements that have been made by Pakistan. The first blatant disinformation was that 2 IAF aircraft were shot down by Pakistan and 3 pilots of Indian Air Force were down. This figure was later revised downwards to 2 IAF aircraft and 2 pilots. The fact, however, is that Indian Army units had reported sighting 2 parachutes falling in POJ&K, which were of 2 F-16 pilots, the aircraft which was shot down by the MiG-21. Pakistan later in the evening changed its statement to say that 1 Indian pilot was in their custody. Therefore, it was only by late evening that Pakistan accepted the fact. Secondly, Pakistan claimed that they intentionally dropped weapons in open space where there was no human presence or military posts. The fact is that Pakistan Air Force aircraft targeted military installations. However, they were intercepted by IAF fighter aircraft, which thwarted their plans. Although PAF bombs have fallen in Indian Army formation compounds, however, they were unable to cause any significant damage to our military installations due to a swift IAF response. Pakistan also stated that no F-16s were used in the operation and no Pakistani plane was downed by Indian Air Force. There is enough evidence to show that F-16s were used in this mission through the electronic signatures, and thereafter the Pakistan is trying to hide this fact. Also, parts of AMRAAM air-to-air missile, which is carried only on the Pakistan F-16s, was recovered east of Rajouri within the Indian territory. Therefore, the fact remains that 1 F-16 of PAF was shot down by IAF MiG-21 Bison. IAF remains ever vigilant, ready and committed to take on any eventuality. IAF has also learned that Pakistan has announced that Wing Commander Abhinandan will be returned to India tomorrow. IAF is happy and looks forward to return of Wing Commander Abhinandan. In response to the counter-terrorist strike by the Indian Air Force, Pakistan Army first
resorted to unprovoked ceasefire violations, as you are aware, in Sundarbani, Bimbar Gali, Naushera and Krishna Ghati sectors on 26th February, with effect from 5 o'clock in the evening and again during the night. This was responded to by the Indian Army in a befitting and appropriate manner. As my Air Force counterpart has elaborated, on 27th February 19, the Pakistan Air Force attempted to target our military establishments in J&K. Specifically, they targeted a brigade headquarter, a battalion headquarter, our defenses and a logistic installation. However, given the high level of preparedness along the line of control and the immediate and punitive response given by our own forces, the Pakistan Air Force's designs were foiled. We continue to maintain strict vigil along both the line of control and the IB sector. Our ground-based air defense weapon systems have been put on high alert all along the line of control and also in some parts of the IB. Our mechanized forces have also been placed on standby. I wish to assure the nation that we are fully prepared and in a heightened state of readiness to respond to any provocation by Pakistan. Despite the turn of events, as you all are aware, the Indian Army is committed to maintaining peace and stability in the region and will continue to act against agencies who harbor inimical designs against India and the citizens of our country. The Indian Navy is deployed in a high state of readiness and remains poised in all three dimensions: on surface, undersea and in air, to deter, prevent and defeat any misadventure by Pakistan in the maritime domain. I can assure you of a resolute, swift and strong response by the Navy when needed. We stand as one with the Army and Air Force to ensure the safety and security of our nation and our citizens. Jai Hind. ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹੁੰਨੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤਣਾਅ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। बुधवार सवेरे पाकिस्तान ने भारत के 2 जहाज़ों को सुट्टण का दावा करदिआं पायलट को गिरफ्तार करने की गल आखी सी। भारत ने भी अपने पायलट की पाकिस्तान की गिरफ्त च होने की पुष्टि करदे कहा कि उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान भारतीय पायलट को सुरक्षित वापस भेजेगा। इस तो बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के बुलारे रवीश कुमार ने दावा किया कि इस कार्रवाई दौरान एक पाकिस्तानी लड़ाकू जहाज़ भारत ने डेग लिया, पर इस कार्रवाई दौरान जिथे एक भारतीय जहाज़ क्रैश हो गया उत्थे एक भारतीय पायलट लापता सी। India had informed about counter-terrorism action it took yesterday against a terrorist training camp of Jaish-e-Mohammed in Pakistan, based on credible evidence that Jaish-e-Mohammed intended to launch more attacks. Against this counter-terrorism action, Pakistan has responded this morning
by using its air force to target military installations on the Indian side. Due to our high state of readiness and alertness, Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. Thank you very much. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਰੋਧੀ 21 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ। Statement that all of us have discussed and are putting out. It's a joint statement. Meeting of leaders of 21 political parties condemned the dastardly Pulwama terror attack by Pakistan-sponsored terrorists of Jaish-e-Mohammed on 14th February 2019. The meeting paid homage to our martyrs and expressed solidarity with our armed forces in crushing the menace of terrorism. The meeting lauded the action taken by the Indian Air Force against the terrorist camp on 26 February 2019 and praised our armed forces for their valor and their bravery. The meeting of 21 parties expressed their deep anguish over the blatant politicization of the sacrifices made by our armed forces by leaders of the ruling party. National security must transcend narrow political considerations. The leaders observed that the Prime Minister has regrettably not convened an all-party meeting as per the established practice in our democracy. The leaders expressed concern on the emerging security situation. Post the statement from the MEA regarding targeting of our military installations and loss of one of our fighter aircraft, the leaders condemned the Pakistani misadventure and expressed their deep concern for the safety of our missing pilot. Leaders urged the government to take the nation into confidence in all measures to protect India's sovereignty, unity and integrity. ਦਰਅਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ HS ਪਨਾਗ ਤੋਂ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ HS ਪਨਾਗ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ इस पायलट ਨੂੰ पाकिस्तान वापस भेज देता सी। जो सबसे पहले जो नियरेस्ट यूनिट होती है जिसके पास पायलट जाता है तो वो उसको चार्ज में लेते हैं और फर्स्ट जो रिपोर्ट है वही बनाते हैं। ये कहाँ पकड़ा गया, किस हालात में पकड़ा गया, क्या इसकी हालात थी। उन टाइम पर कैमरे वगैरह नहीं होते थे, नहीं तो हम मतलब फ़ोटोज़ ले सकते थे, तो फ़ोटो वगैरह ले सकते हो। अभी जो है सिचुएशन फ्लूइड है, क्योंकि जो हमारे इस वक्त जो हालात हैं बॉर्डर के ऊपर, दो एयर स्ट्राइक्स तो हो चुकी हैं। एक हमने की है, फिर उन्होंने की, और उसके बाद एरियल इंगेजमेंट हुई। तो वो अभी फ्लूइड सिचुएशन है। अभी आगे क्या होने वाला है कुछ दिनों में इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जब हालात ठीक हो जाते हैं, जब थोड़ा सा मतलब आपस में बातचीत शुरू हो जाती है,
या अगर लड़ाई शुरू हो जाए तो सीज फायर हो जाती है, उसके बाद आमतौर पर प्रिजनर्स को एक्सचेंज कर लिया जाता है। जिनेवा कन्वेंशंस जो है वो हर किस्म के कॉन्फ्लिक्ट पर लागू है। तो ये बहुत लोगों का ये ख्याल है कि वो सिर्फ जब लड़ाई हो वॉर के लिए है जिनेवा कन्वेंशंस, नहीं। जिनेवा कन्वेंशंस के ऊपर उसके बाद बहुत सारे उनके अमेंडमेंट्स हो चुके हैं और प्रोटोकॉल्स हैं जो लिखित में हैं, तो उनके मुताबिक ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है ये उनको बहुत विस्तार में लिखा गया है। और जो अनडिक्लेयर्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है, अनडिक्लेयर्ड लड़ाई होती है, वो उसमें भी जिनेवा कन्वेंशंस लागू होते हैं। और पाकिस्तान और भारत दोनों इसके सिग्नेटरीज हैं। देश जैसे गुडविल की तौर के ऊपर जो है वो प्रिजनर्स को पहले ही वापस कर देते हैं, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि जब सीज फायर होता है या जब बातचीत शुरू हो जाती है तो पहला एक्शन ये लिया जाता है कि ये, लेकिन जब एक मुल्क डिक्लेयर कर देता है कि हमारे पास प्रिजनर है, उसके बाद उस प्रिजनर को जो है रेड क्रॉस का एक्सेस लागू हो जाता है। तो मुझे यकीन है कि अभी जैसे ये हैं तो रेड क्रॉस इसके बाद इनको रेड क्रॉस को पता चल जाएगा कि जो रेड क्रॉस पाकिस्तान में है उनका एक्सेस होगा, हाँ, उनका एक्सेस उनको मिल जाते हैं। और फिर उसके बाद जो POWs का नॉर्मल प्रोसीजर है वो शुरू हो जाता है। ऐसे किसी भी प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ कोई किसी किस्म का गलत सलूक नहीं करना, खास तौर पे उसके साथ मारपीट नहीं करनी है, और पकड़ने के बाद ना ही उसको तंग करना है, ना उसकी बेइज्जती करनी है। ये भी लिखा हुआ है जिनेवा कन्वेंशन में कि इंसल्ट्स नहीं देने, उसको पब्लिक स्पेक्टिकल नहीं बनाना। लोअर लेवल के ऊपर उस वक्त हमले हो रहे होते हैं, खास तौर पे जब ज़मीनी कार्रवाई होती है, कुछ कैजुअल्टी सफ़र किए हुए होते हैं ट्रुप्स ने, तो ट्रुप्स में थोड़ा सा रोष होता है। तो वो इस ये तो कभी मैंने भी नहीं सुना भारतीय सेना में कि भारतीय सेना ने किसी कैदी को मार दिया, लेकिन जब शुरू का जो थोड़ा सा जो भावुकपन होता है, जो जोश होता है, जो थोड़ी सी दिल में एक किस्म की नफरत होती है, उसकी वजह से थोड़ी रफिंग अप जो है इनिशियल स्टेज पर हो जाती है, जैसे कि परवेज़ कुरैशी मेहदी के साथ हुई, और जैसे कि मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जैसे अभिनंदन जो हमारे विंग कमांडर हैं उनके साथ भी गांव वाले कर रहे थे। लेकिन उसमें भी आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान के ट्रुप्स वहां पहुंचे तो उन्होंने उसको काबू में किया, उसके बाद वो उनको आगे ले गए। आमतौर पर ऑफिसर्स थोड़े से उनको थोड़ी सी मतलब वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो जानते हैं कि इसमें मतलब ये गलत बात है, तो उसको बात को कंट्रोल जवानों की वजह से या कई बार सिविलियंस की वजह से कई बार प्रिजनर्स के साथ और बदसलूकी होती है, और कई बार ऐसा भी सुनने में आया है कि उनका टॉर्चर किया जाता है। लेकिन ऐसा बहुत रेयर है कि कोई ऐसा केस हो कि जब कैदी को पीछे तक पहुंच गया है, हेडक्वार्टर तक, उसके बाद उसका टॉर्चर किया गया। टॉर्चरिंग जो की जाती है कैदी की, वो सिर्फ एक तौर पे एक हेट्रेड की भावना को दर्शाती है, उससे कोई गेन नहीं है। और ये हेट्रेड मैंने ज़्यादातर नीचे लेवल तक ही सीमित रहती है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान सेना ने भी आम तौर पर जो है इस जिनेवा कन्वेंशंस को सही फॉलो किया। हमने जो है 26 तारीख की सवेरे मतलब 3:30 और 4 के बीच में बालाकोट टेररिस्ट का जो ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट था उसके ऊपर हमने एरियल स्ट्राइक्स किए थे, और बहुत सक्सेसफुल और कामयाब ऑपरेशन था। और हमने साफ जाहिर कर दिया कि हमारा कोई इरादा नहीं है और हम सिर्फ मतलब टेररिस्ट के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि यही टेररिस्ट और प्लानिंग कर रहे हैं, और ये हमारा हमला प्रीएम्प्टिव था क्योंकि वो उनके और प्लान्स हैं हिंदुस्तान में सुसाइड मिशन वगैरह करने के। लेकिन पाकिस्तान ने जो है पहले भी कहा था और उस वक़्त भी उन्होंने कहा कि हम इस बात का जवाब ज़रूर देंगे। एक तो ये इस बात को दर्शाता है कि पाकिस्तान जो है टेररिस्ट के साथ मिला हुआ है। देखिए, बात ऐसी है कि पाकिस्तान के साथ भारत ने हर किस्म के जो है तरीके अपनाने की कोशिश की है। 47 की जंग हुई है, 65 की जंग हुई है, 71 की जंग हुई है, शिमला अकॉर्ड साइन हुआ है। उसके बाद वाजपेयी जी और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह खास तौर पर उन्होंने पाकिस्तान की बहुत इंगेजमेंट की, और
बहुत इन्फॉर्म वाजपेयी जी ने तो सीज़ फायर लागू करवाई 2003 नवंबर में, मतलब LOC के ऊपर, और बहुत इंगेजमेंट की और कई अलग अलग किस्म के सॉल्यूशंस को वर्कआउट करने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान ने कभी किसी बात को आगे पूरा नहीं निभाया। या तो कोई कहता कि हमारी सरकार बदली हो गई है, या सेना का कू हो गया है, या किसी ना किसी वजह से उन्होंने नहीं किया। उनकी एक बड़ी क्लियर स्ट्रेटजी है 1971 के बाद, और उससे उसके लिए उनका एक पॉलिटिकल कंसेंसस है देश में, पॉलिटिशियंस के बीच में, अलग अलग पार्टीज के बीच में, और फौज के साथ और लोगों के साथ भी। और वो कंसेंसस ये है कि हमें 1971 में हिंदुस्तान ने 2 हिस्सों में कर दिया, हमारा बंटवारा, हमारे को मतलब ब्रेकअप कर दिया। 1947 में कश्मीर हमारे से धोखे के साथ ले लिया गया है, उसके ऊपर हमारा अधिकार है, और हम भारत के साथ बराबरी चाहते हैं इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस में बराबरी चाहते हैं। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी है, और इस स्ट्रैटेजी को स्टेडफास्टली फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि भारत की सेना ताकतवर है, मजबूत है, वो आपके साथ डायरेक्ट मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने ये तरीका अपनाया प्रॉक्सी वॉर का, या जिसे कहते हैं 4th जनरेशन वॉर, जिसमें आप टेररिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ अपने टेररिस्ट भेजते हैं, कुछ लोकल जो मिसगाइडेड यूथ है उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसकी वजह से वो वहाँ चला रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने अपने टेररिस्ट यूज़ करते हुए हिंदुस्तान के हिंटरलैंड में भी हमले किए हैं। तो इनकी ये स्ट्रैटेजी है कि न्यूक्लियर बैकड्रॉप है, हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हमने न्यूक्लियर हथियार की जो पिस्तौल है वो अपने सिर के ऊपर लगाई हुई है, तो अगर आप कुछ ज़्यादा करोगे तो हम उस गोली चला देंगे। फिलहाल ये नहीं, देश दुनिया ਦੀਆਂ तमाम खबरां ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ।